Hello and welcome to this late night edition of Study with Sudhir, and this is a late night edition because there is some important first and exclusive news breaking on Study with Sudhir which you wouldn't find on any other channel, and this concerns the students of CBSE but it would be equally relevant for the ICSE students. ये CBSE के विद्यार्थियों के लिए तो सीधा सीधा ताल्लुक है इस पर्टिकुलर वीडियो से, लेकिन इसके साथ साथ आईसीएसई के विद्यार्थियों को भी इसमें रुचि होगी क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथडोलॉजी कि जो परीक्षाएं नहीं हुई, जो परीक्षाएं जुलाई 2020 में करानी जानी थी, विच वर कैंसल्ड बाय द सीबीएसई इन द सुप्रीम कोर्ट टुडे, हाउ विल द स्टूडेंट्स गेट द मार्क्स इन दोज पेंडिंग पेपर्स? Aren't you curious? I'm sure you would be. In fact, most parents and students have been wondering since 2:30 when this decision was announced, how are we going to get the marks in the pending papers, right? CBSE वालों को तो टेंशन थी ही 12वीं कक्षा के साथ साथ ICSE वालों को भी थी क्योंकि मेथडोलॉजी अभी तक ICSE ने बिल्कुल भी अनाउंस और रिवील नहीं किया है. Now, why did this confusion arise? That's because in the Supreme Court, Solicitor General Mr. Tushar Mehta said the marks of the last 3 exams will be taken into account, and everyone started wondering which 3 last exams are we talking about? कुछ लोगों को लगा कि शायद वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्क्स की बात कर रहे हैं क्योंकि आईसीएसई वालों ने भी प्री बोर्ड मार्क्स मांगे थे स्टूडेंट्स के स्कूल से. Some other people felt that perhaps the last 3 papers which were conducted in the month of March, those will be taken into account. सच्चाई ये है that both are not true. And what is true? You need to listen to Study with Sudhir to get this exclusive information on how are you going to get the marks. Okay. Category number 1 for students of class 10 and 12, and I'll explain this both in English and Hindi so that students from both South India and North India can understand this easily. For students of class 10 and 12, those who have completed their exams, their results will be declared based on the performance in the exams, right? Simple, no problem, no confusion. जिन्होंने भी अपनी परीक्षाएं खत्म कर दी हैं फरवरी और मार्च के महीने में, बिफोर दी एग्जाम्स वाज सस्पेंडेड ऑन द 18th of March, तो उसके लिए चलते तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. जैसे उन्होंने किया उसके बेसिस पे उनको मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, द सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ, एंड यू नीड टू लिसन टू दिस केयरफुली, दिस इज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन एग्जाम्स इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, 4 पेपर्स, 5 पेपर्स. ओके, इन दैट केस, एंड उनके शायद 1 पेपर या 2 पेपर बचे हों, इन दैट केस the average of the marks obtained in the best 3 performing subjects. अगर आपने 4 पेपर दिए हैं और आपका 1 पेपर बाकी है तो आपको 5वें पेपर पे में कैसे मार्क्स दिए जाएंगे? Out of the 4 they will see which are the 3 in which you have got the highest marks. Okay, so let's assume you have got 80 in one paper, 70 in another paper, 60 in another paper, right? So the average of 80 plus 70 plus 60 will be taken 70, and you will get 70% in the 5th paper. In the 4th paper you may have got less than 60, right? So the top 3 and the average of that 3 will be applied to your 5th paper, and I think this is an extremely student friendly decision by the CBSE, something which will really make the students happy because one, it is based on the students own quality of work in the board exams that he or she has given, and number 2, it's pretty fair because agar pre-board exams ki baat kare, at that time the student is not performing at his or her best, he or she has not peaked in that sense, right? So it would be a little unfair, but this in many senses will be seen by most students and parents as fair. So I compliment the CBSE for this kind of a formula that has been devised. Category number 3, for students who have appeared in exams in only 3 subjects, not 4 or 5, only 3, and maybe you need another, you have still left about 2 or 3 papers left. In that case, the average of the marks obtained in the best 2 performing subjects, not 3, out of the 3, जो 2 best performing है, उनका average लिया जाएगा, and that will be applied to the remaining papers which you would have otherwise given in July 2020 अगर cancel नहीं हुए होते. Now, there is a 4th category of students,
and these are students of class 12, mainly from Northeast Delhi. Because of the riots in the month of February, the students of Northeast Delhi could not take the exams, and they have at best given exams in one subject or two subjects. Okay, so their results will be declared based on the performance of the appeared subject, जिसमें भी उन्होंने भाग लिया है जिस भी एक सब्जेक्ट में, and the performance in the internal oblique practicals oblique project assessment. इन तीनों को assess किया जाएगा and that will be used to assess them in order to give them marks in the remaining papers. Now इन विद्यार्थियों के लिए एक खास तौर से एक प्रोविजन की गई है कि जब भी ऑप्शनल पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं बोर्ड द्वारा, whenever the situation is conducive, as the Solicitor General said in court today, maybe in the month of September, maybe in the month of October. So if any one of these students, if any one of these students from Northeast Delhi, class 12, want to take the examinations, they can do so, but only if they want to do so. Okay, so that is as far as the assessment formula is concerned. I hope this is loud and clear. The question now arises is, ICSE क्या करेगा? ICSE ने, जिसने एक तरह से CBSE को पूरी तरह से कॉपी किया, CBSE ने कैंसिल किया, मैं भी कैंसिल करता हूं. Okay, will it also follow the same formula given the fact that they have working out on a different formula based on the प्री बोर्ड मार्क्स, जिसको लेकर एक तरह से काफी रोष है काफी विद्यार्थियों में. ओके, सो और वेदर इट विल अडॉप्ट द सेम मेथोडोलॉजी ऑफ द CBSE, वी डोंट नो. ये कल कोर्ट में शायद ICSE इसके बारे में बातचीत कर सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर बिग खबर, रिजल्ट्स कब आएंगे. ओके, टू थिंग्स, ऑल रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड टुगेदर. दैट इज जितने भी डिफरेंट 4 कैटेगरीज मैंने बताए, ऐसा नहीं है कि कैटेगरी 1 को अलग से, कैटेगरी 2 को अलग से, ऐसा नहीं है. सभी के रिजल्ट्स एक साथ आएंगे एंड द रिजल्ट्स डेट विल बी around 15th of July. Okay, so that it gives students sufficient time to apply to institutions in India and abroad. Okay, now optional subjects की examinations की तो मैंने बात की कि whenever the environment is conducive, it will be conducted, but those students who are opting to take these optional exams in order to better their performance need to remember one thing very clearly. CBSE ने कहा है कि जो विद्यार्थी इन ऑप्शनल एग्जाम्स में भाग लेते हैं, जो मार्क उनको इन ऑप्शनल एग्जाम्स में मिलेंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल. अगर उसमें कम आते हैं पहले रिजल्ट के मुकाबले में, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को जुलाई वाले मार्क्स दो, वो नहीं चलेगा, आपको यही मार्क्स दिए जाएंगे. तो बिफोर यू डिसाइड टू टेक दोस एग्जाम्स, अपीयर इन दोस एग्जाम्स, थोड़ा सोच लीजिएगा. ओके, नाउ द HRD ministry will also present before the Supreme Court in great detail the reasons why it decided to cancel the exams, because cancellation of exams एक बहुत बड़ा कदम है. ऐसा because tomorrow another year it will be cited as a precedent कि 2020 में ऐसा CBSE ने किया था. So they have to be very careful about the reasons why they arrived at this kind of a critical decision. तो HRD ministry ने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एक तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी पळनिस्वामी ने मिनिस्ट्री ऑफ HRD को लिखा था कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स प्लीज पोस्टपोन द एग्जामिनेशंस टिल द सिचुएशन इज कंड्यूसिव. दूसरा, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने भी लिखा था कि CBSE के एग्जाम्स कंडक्ट नहीं किए जाने चाहिए. महाराष्ट्र की एडिशनल सेक्रेटरी हु इज इन चार्ज ऑफ एजुकेशन, उन्होंने भी लिखा था और उन्होंने वैसे भी कहा था कि ICSE के एग्जाम्स तो यहाँ पे कंडक्ट किए नहीं जा सकते हैं महाराष्ट्र में. साथ साथ ड्यूरिंग ए वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ द 7th of June ऑल्सो दे हैड सेड बोथ CBSE एंड ICSE एग्जामिनेशंस कैन नॉट बी कंडक्टेड इन महाराष्ट्र बिकॉज महाराष्ट्र द नंबर ऑफ केसेस इज रियली spiraling beyond control. Then another reasons was exams cannot be, in light of these situations and circumstances, the exams cannot be conducted throughout the country. Then the HRD ministry also felt that there was too many last minute changes in the containment zones. आज के दिन मंगलवार को ये एरिया कंटेनमेंट जोन नहीं है, लेकिन बुधवार को कंटेनमेंट जोन बन जाता है. ओके, तो देयर आर टू मेनी चेंजेस एंड इफ एनी स्टूडेंट इज विद इन दोस कंटेनमेंट जोन्स, इट मींस दैट ही और शी विल नॉट बी अलाउड by the community at large to step out and take the examination because he or she could be a potential risk to the other students and exam staff at that exam center. So too many ifs and buts. Then also many schools
had been identified as quarantine centers. 200 Kendriya Vidyalayas were COVID centers. Similarly, 140 Jawahar Navodaya Vidyalayas were also quarantine centers, COVID centers. So, एक तरह से जो प्रावधान किया जा रहा था, जिस तरह का एक तरह से facilities were being created, they were not being seen as absolutely perfect to conduct an examination on a national scale. So, because of these reasons, the CBSE decided that it will be best in the present circumstances to cancel the examinations, but give some students whoever wants to the option of taking the examination at a later date if the situation is conducive. But the big khabar, or as we say here on Study with Sudhir, the mota headline is how will you get the marks in the pending papers and whether ICSE will also follow the same formula. So that's it. Live and exclusive here on Study with Sudhir. Thank you very much for watching. Good night. God bless you. Stay safe.